So good evening everyone. Hello, good evening to all of you. Good evening once again. And let us get started with the today's session. चलिए quickly every one of you join the class and उसके बाद हम जल्दी जल्दी start करते हैं. Quickly join the class everyone. Good evening Aditi, good evening Narendra, good evening Pita, good evening Dev, good evening to all of you. Good evening Nishtha. Quickly join everyone. So after that we'll get started. आज की जो क्लास है हमारी यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं about the फर्स्ट इन इंडिया के जो क्वेश्चंस है वो आज के सेशन में हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं. सो क्विकली एवरीवन लेट अस गेट स्टार्टेड विद द टुडेज सेशन. एंड सैनिक स्कूल के पर्पज से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है बट आरएमएस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. द टाइटल ऑफ द क्लास इज फर्स्ट इन मेल्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. गुड इवनिंग राजकुमार. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द टुडेज के सेशन. इसके साथ ही साथ एवरीवन ओके एंड अलॉन्ग विद दिस हमारा जो लेटेस्ट बैच है फॉर द सैनिक स्कूल एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, मेनली दिस बैच इज फोकसिंग फॉर द एडमिशंस टू क्लास 6. अगर आप क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपकमिंग ईयर के लिए टारगेट कर रहे हो तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो. डेली देर आर गोइंग टू बी 2 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस. लाइव बैच है, डेली 2 आवर्स लाइव क्लासेस के होंगे. रेगुलर आपको ई नोट्स, डिजिटल नोट्स आपको प्रोवाइडेड होंगे. जो भी हम क्लास में पढ़ रहे हैं उसके नोट्स आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे प्रोवाइड करते रहेंगे. साथ ही साथ हमारी जो 2 लाइव क्लासेस होंगी उसके डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे. जैसे अगर मैथ्स की क्लास है तो मैथ्स की क्लास में जो भी पढ़ा उसका प्रैक्टिस पेपर आपको एमसीक्यू बेस्ड मिलेगा. प्रैक्टिस पेपर में जो क्वेश्चंस होंगे उनका पैटर्न भी सैनिक स्कूल आरएमएस के बेसिस पे होगा. तो डेली के आपको 2 प्रैक्टिस पेपर यहाँ देखने मिलेंगे. एवरी संडे वी विल हैव अ टेस्ट. टेस्ट का जो पैटर्न होगा वो 125 क्वेश्चंस के बेसिस पे होगा एंड इट विल बी ऑन द पैटर्न ऑफ सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम. सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के बेस्ट पैटर्न पे ये टेस्ट होगा. साथ ही साथ इसको आपके साथ में ही आपको 15,000 प्लस 1500 प्लस क्वेश्चंस का एमसीक्यू क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक भी इसमें मिलेगा जिसको आप ऑनलाइन ही सॉल्व कर सकते हो. इट विल कंटेन मोर देन 1500 क्वेश्चंस जिसमें जीके के क्वेश्चंस होंगे, आपके मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे. यू विल हैव द क्वेश्चंस फ्रॉम इंटेलिजेंस, यू विल हैव द क्वेश्चंस फ्रॉम रीजनिंग एंड लैंग्वेज. सारे क्वेश्चंस इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसके साथ ही साथ इट विल हैव अ लाइव डाउट सेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एलिजिबिलिटी ऑफ दिस बैच. 1 ईयर का इसका ड्यूरेशन है. जो लाइव क्लासेस होंगे आपके लाइव क्लासेस विल बी कंटिन्यू टिल द डेट ऑफ एग्जाम. ओके मतलब जब तक आपका सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के ईयर के लिए कंडक्ट नहीं हो जाता तब तक इसके क्लासेस चलते रहेंगे. और उसके बाद जो रिकॉर्डेड वीडियोस, पेपर, सेशन, जो कुछ भी इसमें मटेरियल होगा इट विल बी देयर टिल 1 ईयर. जब भी आप उसको परचेज करे हो तब से लेके 1 ईयर तक आपके पास सारे रिकॉर्डिंग्स, पूरे टेस्ट, पीडीएफ, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट कोर्सेज आई कैन से फॉर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम. प्राइस इसका हमने बहुत ही कम रखा हुआ है so that it is affordable for all of you. 7,999 लाइव क्लासेस रहेंगे जब तक एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता और उसके बाद वीडियोस वगैरह सारी चीजें आपके पास 1 साल तक अवेलेबल रहेंगी. 7,999 को इसको भी आप पार्ट पेमेंट से या वन टाइम पेमेंट जैसे भी करना है उसमें आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हो. सो डायरेक्टली यू कैन एक्सेस इट ऑन द वेबसाइट knowellbell.com और इसके साथ ही साथ यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर. वहां से भी आप इस पर कनेक्ट हो सकते हो. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज क्लास. हेलो आरव, हेलो रजनीश, हेलो बेबी सिंह. सो आज के सेशन में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद द फर्स्ट इन इंडिया. फर्स्ट इन इंडिया के क्वेश्चन होने वाले हैं. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द क्लास. ओके जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Now the screen is completely visible. So the first question is, who was the first Prime Minister of India? First in mail का बहुत ही important question है. The first question is, who was the first Prime Minister of India? Subhash Chandra Bose, Indira Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru or Lal Bahadur Shastri? Quickly provide your answers. Okay, C. The first answer is given by Baby Singh. Rajneesh Bala is also correct. Who was the first Prime Minister of India? आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? The first Prime Minister of India was Pandit Jawaharlal Nehru. Who was the first Prime Minister of India? The first Prime Minister of India, everyone we have to keep in mind, was Pandit Jawaharlal Nehru. Indira Gandhi के लिए अगर क्वेश्चन आता है, so Indira Gandhi was the
first women prime minister of India? Indira Gandhi was the first women prime minister of India. और पंडित जवाहरलाल नेहरू में याद रखेंगे was the first prime minister of India. The next question after this is who was the first female chief minister of a state in India? किसी भी स्टेट की इंडिया में सबसे पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर कौन थी? तो चीफ मिनिस्टर you always have to keep in mind chief minister is for a state. So for an Indian state, who was the first female chief minister? The options are option A Suchita Kriplani, Mamta Banerjee, Mayawati or Sushma Swaraj. Quickly provide your answers. Question number 2, what is going to be the correct answer? Suchita Kriplani, Mamta Banerjee, Mayawati or Sushma Swaraj. Good, everyone is providing the answer correctly here. So right answer is Suchita Kriplani, who was the first female chief minister of a state. First women chief minister किसी state की कौन थी? Suchita Kriplani, and she was the chief minister for the state of Uttar Pradesh. Uttar Pradesh की chief minister थी. So correct answer for the question is option A Suchita Kriplani. Okay, the next question after this is question number 3. Who was the first president of India? Who was the first president of India? Pratibha Patil, B.R. Ambedkar, Dr. Rajendra Prasad or Pandit Jawaharlal Nehru. Question number 3. Provide your answers, everyone. Who was the first president of India? Okay, for question number 3. A is not the answer, Narendra. Why you are answering A? Bhavya has answered correctly for the third question. Good, Bhavya. Okay. So, for the third question, everyone, you have to keep in mind, who was the first president of India? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? सो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री. प्रेसिडेंट जो हमारे होते हैं, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री. इसके साथ ही साथ प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. Okay, president is also the supreme commander of Indian armed forces. Indian armed forces के supreme commander भी कौन होते हैं? President is the supreme commander of Indian armed forces. President is also the first citizen of India, and the first president of India was Dr. Rajendra Prasad. Okay, yes, I wrote your name. You were the first to answer, Bhavya. Okay, the next question after this is who was the first home minister of India? India के पहले गृह मंत्री या पहले होम मिनिस्टर कौन थे? Who was the first home minister of India? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री, अमित शाह और सरदार वल्लभ भाई पटेल. Who was the first home minister of India? Okay, B is not the answer, Bhavya. The correct answer for the question is D, Sardar Vallabh Bhai Patel. Sardar Vallabh Bhai Patel was the first home minister of India. The first answer is given by Narendra for this question. Who was the first home minister of India? India के पहले home minister कौन थे? The first home minister of India was Sardar Vallabh Bhai Patel. Sardar Vallabh Bhai Patel is also called as Iron Man of India. Sardar Vallabh Bhai Patel को हम क्या कहते हैं? He is also called as the Iron Man of India. Additionally, he is जो हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है, the statue of unity is the statue of Sardar Vallabh Bhai Patel. Okay, so this also we have to keep in mind. Okay, the next question after this is question number 5. Who was the first Chief Justice of India? Who was the first Chief Justice of India? Justice Bhuvneshwar Prasad Sinha, Justice Harilal J. Kania, Justice Sudhir Ranjan Das or Justice Kailash Nath Vanchu. Who was the first Chief Justice of India? Chief Justice of India कहाँ पर होते हैं? Chief Justice of India is for Supreme Court. Chief Justice of India के लिए अगर हम कह रहे हैं, so Chief Justice of India will be in Supreme Court. Chief Justice of State High Court में होते हैं. Okay, Supreme Court. Where is Supreme Court located? Supreme Court is in Delhi. Supreme Court कहाँ पर है? It is in Delhi. What is the right answer for the question? B. Very good. Justice Harilal J. Kania. Okay. So correct answer for the question is who was the first Chief Justice of India? Harilal J. Kania or Chief Justice Harilal J. Kania. Very good. The next question after this, who was the first female IPS officer? This is the previous year RMS question. RMS में पूछा गया था ये question. Who was the first female IPS officer? भारत में पहली IPS officer कौन थी? What is the meaning of IPS? IPS का मतलब क्या है? IPS stands for
इंडियन पुलिस सर्विसेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईपीएस? आईपीएस का फुल फॉर्म यहाँ पर है इंडियन पुलिस सर्विसेज. हु वाज द फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर? अपराजिता राय, किरण राय, संजुक्ता पाराशर और डॉक्टर मीना बोरवांकर. B. Very good. Everyone is answering correctly. The first answer for the sixth question is provided by Narendra has given the first correct answer here. Kiran Bedi. Kiran Bedi was the first women IPS officer. Okay, who was the first women IPS officer of India? The first women IPS officer of India was Kiran Bedi. तो हम ध्यान रखेंगे. The right answer for the question is option B, Kiran Bedi. Next after this, who was the first women to go into the space? Who was the first Indian women? Indian के लिए आपको मार्क करना है. Who was the first Indian women to go into space? कल्पना चावला, स्मिता विलियम्स, राकेश शर्मा, शिरीषा बंडाला. What is the right answer over here? Quickly, सभी जल्दी जल्दी आंसर्स प्रोवाइड करेंगे. What is the correct answer? Good. Everyone is answering correctly here. Good, everyone. Okay, so the right answer for the question is Kalpana Chawla, who was the first Indian woman to go into the space. The first Indian woman to go into the space was Kalpana Chawla. So right answer for the question is option A, Kalpana Chawla. My voice is low. Let me check it. नहीं बेटा, voice तो properly आ रही है. Okay. The next question after this. Who was the first Indian to win a Nobel Prize? सबसे पहले इंडियन जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था. Who was the first Indian to win a Nobel Prize? So you have to keep in mind Nobel Prize. Nobel Prize is given in 6 fields. Nobel Prize जो है 6 fields में दिया जाता है. What are the 6 fields? The first field is literature. Literature में Nobel Prize दिया जाता है. In addition to literature, Nobel Prize is also given in Nobel Prize is also given in economics. Nobel Prize is given in peace. It is given in chemistry. It is given in medicine or physiology and physics. So first Nobel Prize India से किसको मिला था? The first Indian to receive the Nobel Prize was Rabindranath Tagore. Who was the first Indian to receive the Nobel Prize? The first Indian to receive the Nobel Prize was Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore in the year of 1911 में इनको नोबेल प्राइज मिला था. फॉर विच बुक? फॉर हिज बुक गीतांजलि. ओके, फॉर गीतांजलि इनको नोबेल प्राइज मिला था. एंड ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. किस फील्ड में इनको मिला था? ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. रविंद्रनाथ टैगोर. दिस वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट लिटरेचर नोबेल ऑफ एशिया. एशिया का पहला लिटरेचर नोबेल था ये, एंड इंडिया का इन जनरल फर्स्ट नोबेल था. अमर्त्य सेन हैज गॉट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स. अमर्त्य सेन को किसमें नोबेल प्राइज मिला है? अमर्त्य सेन हैज रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स. ओके, सो द फर्स्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8. अगेन फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो द फर्स्ट आंसर इज गिवन बाय नरेंद्र. सो गुड everyone. The right answer for the question is option A, Rabindranath Tagore. Okay, the next question after this is question number 9. Who was the first Indian woman to win the title of Miss World? Who was the first Indian woman to win the title of Miss World? Aishwarya Rai, Priyanka Chopra, Sushmita Sen. This is not Sen, this is Sen. And Rita Faria Powell. What is the correct answer? Quickly, provide your answers, everyone. Who was the first Indian woman to win the title of C? Very good. C. No, C is not the right answer. Not Priyanka Chopra. The first Indian woman to win the title of Miss World. Okay, so you have to keep in mind the correct answer for the question is Rita Faria, the first Indian woman to win the title of Miss World. पहली भारतीय महिला जिनको मिस वर्ल्ड का टाइटल दिया गया था. So we'll keep in mind the correct answer for the question is Rita Faria. Okay, Rita Faria Powell, and Rita Faria is the right answer for question. So correct answer we have is option D. The next question after this, who was the first Indian to crowned as Miss Universe? Miss Universe crown करने वाली सबसे पहली, who was the first woman, Indian woman to be crowned as Miss Universe? मानुषी चिल्लर, लारा दत्ता, सुष्मिता सेन और डायना हेडन. What is the correct answer for this question? मानुषी चिल्लर, लारा दत्ता, सुष्मिता सेन और डायना हेडन.
Okay, for this question you have answered correctly, Narendra. Okay, Sushmita Sen, the first Indian woman to win the title of Miss Universe. So correct answer is Sushmita Sen, and Narendra has given the first answer for the question. So good, Narendra. Okay, C is the right answer. Good. The next question after this, who was the first in women president of India? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? Who was the first women prime minister of India? इंडिया के सबसे पहली women president कौन थी? Not prime minister, sorry. The question is asking for president. Smriti Irani, Pratibha Patil, Nirmala Sitharaman, or Sonia Gandhi? Question number 11. Let us see who will answer first. B. Very good. Okay. What is the correct answer for the question? Pratibha Patil. Okay. Who was the first Indian woman to be the president of India? Pratibha Patil हम याद रखेंगे is the right answer. Correct Baby Singh, correct Narendra, correct Bhavya. Okay, the right answer is Pratibha Patil. B is the correct answer. First women president was Pratibha Patil, and second women president that currently we are having is Srimati Draupadi Murmu. Second women president is Srimati Draupadi Murmu. Second women president of India is Srimati Draupadi Murmu. The next question is question number 12. Who was the first Indian women to receive Bharat Ratna? Who was the first Indian women to receive the Bharat Ratna? Bharat Ratna के बारे में अगर हम बात करेंगे, so Bharat Ratna is the highest civilian award in India. Okay, Bharat Ratna India का highest civilian award है India में. Total how many civilian awards are there in India? In India we have total of 4 civilian awards. Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The highest civilian award we have is Bharat Ratna. Bharat Ratna के बाद में we have Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. Bharat Ratna का जो shape होता है, it's the shape of a people's shape. Okay, so that you have to keep in mind. Next after this, who received it? Lata Mangeshkar, Indira Gandhi, Pratibha Patil or Mother Teresa? What is the correct answer? Lata Mangeshkar. Why Lata Mangeshkar? Bhavya, ये तो गलत answer होगा. The first Indian woman to receive Bharat Ratna was Srimati Indira Gandhi. Who was the first Indian woman to receive the Bharat Ratna? पहली भारतीय महिला जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, she was Srimati Indira Gandhi. Okay, Indira Gandhi was also the first women prime minister of India. Indira Gandhi was also the first women prime minister of India. वो इंडिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी. So this also we have to keep in mind. The right answer for the question is option B. Question number 13. Who was the first female judge in Supreme Court? Who was the first female judge in Supreme Court? Sujata Manohar, Ruma Pal, Meera Sahib Fatima Bibi or Gyan Sudha Mishra? What is the correct answer here? Sujata Manohar, Ruma Pal, Meera Sahib Fatima Bibi or Gyan Sudha Mishra? Provide your answers. What will be the correct answer here? 13 ka C. Okay, the first answer here is given by Narendra. Second after this we have Kavya. Very good. The first women, okay, judge of Supreme Court. Supreme Court की पहली महिला judge. The first women judge of Supreme Court was Fatima Bibi. Okay, the correct answer for the question is Fatima Bibi. So A is not the answer part. Okay, A answer नहीं है. The correct answer is Fatima Bibi. Option C is the correct answer. So this you have to keep in mind. Correct answer for the question will be option C, Fatima Bibi. Question number 14. Name the first Indian woman to win a gold medal in wrestling at Commonwealth Games. First Indian woman to win a gold medal in wrestling at Commonwealth Games. Commonwealth Games में पहली Indian woman जिन्होंने सबसे पहली बार wrestling में gold medal जीता हो वो कौन थी? गीता फोगाट, बबीता फोगाट, साक्षी मलिक और अलका तोमर. साक्षी मलिक is not the right one. साक्षी मलिक नहीं होगा. नरेंद्र. What will be the correct answer, everyone? Provide कीजिए, all of you, provide your answers. No, the right answer for the question is Geeta Phogat. We are talking about Commonwealth Games, not about Olympics. Okay, हम Commonwealth Games के बारे में यहाँ पे discuss करें. We are not talking about Olympics. So right answer for the question is option B. Correct, Baby Singh. Correct, Bhavya. Correct part. Okay, the right answer for the question is option B. Next is question number 15. Who was the first Indian pilot?
Who was the first Indian pilot? सरदार वल्लभ भाई पटेल, JRD टाटा, सरदार बलदेव सिंह और RK Shanmugham Shetty. What is the correct answer? No, 15th one is incorrect. C is not the right answer, Narendra. Let us see who will discuss the answer this. The first Indian pilot. Who was the first Indian pilot? Question number 15. Okay, the first answer is given by Bhavya. Very good, Bhavya. The first Indian pilot was JRD Tata. Who was the first Indian pilot? The first Indian pilot was JRD Tata. भारत के सबसे पहले जो pilot थे, airline pilot, he was JRD Tata. Okay, you have answered incorrectly. Sardar Baldev Singh is not the answer. The correct answer is JRD Tata. So right answer for the question will be option B, JRD Tata. Next question is question number 16. Who was the first Indian to win a Grammy Award? सबसे पहले इंडियन जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था. Who was the first Indian to win a Grammy Award? ग्रैमी अवार्ड किस में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड is given in music. Okay, ग्रैमी अवार्ड is given in the music. What is the correct answer? रिकी केज, विश्व मोहन भट्ट, जावेद अख्तर और पंडित रविशंकर. Good. 16th one, you have answered correctly. Good. Correct Bhavya, correct Kavya, correct Narendra. The right answer for the question is Pandit Ravi Shankar. The first answer is given by Narendra. Okay, Pandit Ravi Shankar. Grammy Awards is given in the field of music. Music में ये दिया जाता है. And Pandit Ravi Shankar was the first Indian जिनको Grammy Award यहाँ पे मिला था. So right answer for the question is option D. Good everyone. Next is the question number 17. Who was the first railway minister of India post independence? That means after independence. Who was the first railway minister of India? India के सबसे पहले railway minister कौन थे? After independence. After independence, who was the first railway minister of India? John Mithai, Mamta Banerjee, Gulzari Lal Nanda और स्वरण सिंह. What is the right answer, everyone? Provide your answers. What will be the correct answer? 17th one. Okay, no one is answering. I'll only provide the answer. The correct answer for the question is option A. Right answer क्या होगा यहाँ पे? The correct answer for the question is option A, John Mithai. Okay. The next question is question number 18. Name the first defense minister of India. Who was the first defense minister of India? India के पहले defense minister कौन थे? Who was the first defense minister of India? सरदार बलदेव सिंह, चंद्रशेखर, PV नरसिम्हा राव और शरद पवार. Who was the first defense minister of India? इंडिया के सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? Very good. Correct. Rajneesh Bala is correct here. Kavya, C is not the right answer. Correct answer क्या होगा? Who was the first defense minister of India? The first defense minister of India was Sardar Baldev Singh. Who was the first defense minister of India? इंडिया के सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? The first defense minister of India was Sardar Baldev Singh. So right answer for the question is option A. Okay, Sardar Baldev Singh. A is the correct answer over here. Question number 19 after this. Who was the first speaker of Lok Sabha? Lok Sabha के सबसे पहले speaker कौन थे? Who was the first speaker of Lok Sabha? शिवराज पाटिल, हुकुम सिंह, जीवी मावलंकर और गणेश वासुदेव मावलंकर, नीलम संजीवा रेड्डी. Who was the first speaker of Lok Sabha? Lok Sabha के सबसे पहले स्पीकर कौन थे? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू शुड नो द आंसर फॉर दिस. हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? गुड. रजनीश बाला हैज प्रोवाइडेड द आंसर फर्स्ट. करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? जीवी मावलंकर. गणेश वसुदेव मावलंकर और जीवी मावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा. ओके, लोकसभा के सबसे पहले स्पीकर कौन थे? द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज जीवी मावलंकर. सो राइट आंसर वी विल हैव फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, Ganesh Vasudev Mavlankar or G.V. Mavlankar was the first speaker of Lok Sabha. And the last and the 20th question for today, who was the first Indian woman to win Ashok Chakra? भारत में अशोक चक्र लेने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? Who was the first woman to win Ashok Chakra? कमलेश कुमारी, नीरजा भनोत, किरण बेदी और साक्षी मलिक. The first Indian women to receive Ashok Chakra. What is the correct answer? The correct answer for the question is option B, Neerja Bhanot. Neerja Bhanot is the first Indian women जिनको क्या मिला था? Who received Ashok Chakra. Okay, इनको Ashok Chakra मिला था. So right answer for the question is option B. Option B is the correct answer. Very good everyone. Okay, so quickly, what are your scores?
अपने अपने स्कोर बताइए सभी. व्हाट आर योर स्कोर्स? किस किस का कितना स्कोर है आउट ऑफ 20? हाउ मच इज योर स्कोर आउट ऑफ 20? 20 में से कितना स्कोर आपका आ रहा है? क्विकली. Yes, Arav, you are late today. You are very late today. We are ending the class and you are joining the class. 18 out of 20. Okay, good, Kavya. Bhavya got 19 out of 20 correct. That's right. Okay. Everyone else, what is your score? आप लोगों का score कितना है? 18 out of 20. Good, pass. That's really good. Very good. Keep it up. Okay. So इसके साथ ही आज का ये जो सेशन है हम यहाँ पे इसको सम अप करेंगे. कल भी हमारी क्लास होगी 8:15 पे, जहाँ पे हम रिवर्स और सिटीज वगैरह के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. सो कल की क्लास आपको फिर से ज्वाइन करना है. द क्लास विल स्टार्ट एट 8:15. 8:15 पे हमारी क्लास रहेगी. सो एवरीवन काइंडली ज्वाइन द क्लास वंस अगेन एट 8:15. ओके. आज की ये जो क्लास है हम यहाँ पे 19 आउट ऑफ 20. ओके. 17 आउट ऑफ 20. ओके. सो आज का ये जो सेशन है, दिस वन वी विल बी समिंग अप हियर. एंड एवरीवन, for those students who are getting connected with the session for the first time, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. हम डेली लाइव क्लास करते हैं at 8:15. यहाँ पे वी प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम. तो आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो. इसके साथ ही साथ यू कैन कनेक्ट ऑन आवर वेबसाइट knowellbell.com, या ऐप पे भी आप कनेक्ट हो सकते हो. देयर आई हैव अपलोडेड मेनी ऑफ द टेस्ट, तो उनको आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो. सो आज का जो सेशन है एवरीवन, वी विल बी समिंग अप हियर एंड वंस अगेन वी विल मीट टुमारो. Bye everyone. Good night. Bye Narendra. Jai Hind.